Namaskar, dear friends. Once again, I welcome you to my YouTube channel History Made Easy by Yogesh Sharma. And today we are going to talk about chapter number 4, that is Thinker, Beliefs, and Buildings. We'll be talking about different thinkers like Lord Mahavira, Lord Buddha, and many other thinkers, and what was their belief system and how their thinking was being propagated through buildings. So, the very first question of this particular chapter deals with a different point of view. This is about Begums of Bhopal. Now, Sachi Stupa and Begums of Bhopal, they both belong to different period of time. But Begums of Bhopal did their very best. Begums of Bhopal did their very best to preserve the Sachi Stupa. So, the role of Begums of Bhopal in preserving Sachi Stupa is very, very important. Now, you can see from here Shah Jahan Begum and Sultan Jahan Begum. They both played important role in preservation of Sanchi Stupa. What they did, a museum was being funded, then the book was also being funded that was being written by John Marshall, and it also escaped from the eyes of railway contractors. Plus, Begums persuaded English and French to take plaster cast copies of the stupa or the gateways. जो गेटवे जो स्तूपा थी उसकी प्लास्टर कास्ट कॉपी आप ले जाइए, ओरिजिनल स्ट्रक्चर को वही रहने दीजिए. This request was being done, and because of the efforts of these Begums, Sultan Jahan and Shah Jahan Begum, we see the stupa of Sanchi today. Right? So this is a contribution made by Begums of Bhopal in preserving the Sanchi stupa. Now, again, I'm just telling you one important thing. The time period is again from 6th century BCE to 6th century CE. We are talking about the same particular time period जो हमने chapter 2, chapter 3 में discuss किया था, same. Now here is a different question, and what does this question say? That mid first millennium BCE is often regarding as a turning point. It's a turning point. It's a turning point in world history, rather world cultural history. Which time period we are talking about? Mid first millennium BCE. Why it is a turning point? Well, there were so many reasons. Number one, throughout the world, different thinkers were emerging. For example, we can see the name of Kongzi, we can see the name of Zarathustra, we can see the name of Plato, Aristotle, and Socrates in Greece, Mahavira and Buddha in India. So these thinkers emerged in different part of world in a particular same period of time. What they did, they tried to understand the mysteries of existence, how human life has evolved. What is the reason behind that? Then what is the relationship between human being and cosmic order? New kingdoms were developing, new cities were coming out, social and economic life was changing, trade was developing. So because of n number of reasons, we say that mid first millennium BCE is regarded as a turning point in world history. Moving forward. Now, sacrifices. You understand by sacrifices? What are sacrifices? Sacrifices. We perform many sacrifices. बहुत सारे rituals, mantras के through. Plus, आप अपनी किसी important चीज को आप उसको God को gift भी करते हैं. So all those things that come under sacrifices. Now, a lot has been said about sacrifices in the ancient known text. Which is the ancient known text? Rig Veda is the ancient known text. So Rig Veda, which was being compiled from 1500 BC to 1000 BCE, and there are many hymns in this particular Veda, and this is in praise of deities. Now, and these hymns were being chanted when sacrifices were being performed. जब भी आप sacrifices perform करते थे, बहुत सारे मंत्रोच्चारण होते थे. Now the question comes, why people sacrificed, why people perform sacrifices? तो उसका रीजन बिल्कुल सामने है. For what? For cattle, for sons, right? For better crops, for all those reasons,
For all those reasons, sacrifices were being performed. Initially, sacrifices were performed collectively. Collectively means सब मिलकर करने लगे. Why it was being later on it was being performed by head of the family, गहापतिज. जो families के head होते थे वो उसको perform करने लगे. दो examples दे रखे हैं, राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ, which was being performed by chief and kings. तो अगर पेपर में पूछा जाता है कि दो सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशंस के नाम बताओ, तो यू विल नेम राजसूय यज्ञ एंड अश्वमेघ यज्ञ एज टू सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ यहां पर एक वर्ड आप देखेंगे, दिस वर्ड. अभी वी टॉक्ड अबाउट वेदा, we have heard about the word Purana. There is another word that is known as Upanishad. Now, what new question the philosophers of Vedic tradition and outside were thinking in 6th century BC? जब पूरे वर्ड में इतना चेंजेस आ रहे थे, तो जो वैदिक थिंकर्स थे उन लोगों ने, जो या आप इसको कह सकते हैं जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, उन लोगों ने क्या किया? क्या उन्होंने लोगों को जाने दिया? क्या उन्होंने अपने अंदर कोई चेंजेस लाए? यस, वो चेंज क्या था? उपनिषद के थ्रू. उपनिषद शो दैट पीपल वर क्यूरियस टू नो अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ, concept of rebirth, and thinkers wanted to know about ultimate reality, debated significance of sacrificial tradition. It means जितने भी ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस पहले आ रही थी, now people started to question and debate those practices. So that was happening in ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन और वैदिक और उपनिषद थिंकर्स. नाउ जहां जब ये डिबेट और डिस्कशंस होते होंगे, भाई कोई जैनिज्म को प्रोपेगेट कर रहा है, कोई बुद्धिज्म को प्रोपेगेट कर रहा है, कोई ब्राह्मणिकल आइडियाज को प्रोपेगेट कर रहा है, तो देयर मस्ट हैव बीन डिबेट और डिस्कशन. इनके बीच में आपस में डिबेट और डिस्कशन होते होंगे. तो डिबेट और डिस्कशन कहाँ होते थे? दे यूज्ड टू हैपन एट कुटाग्रहशाला. कुटाग्रहशाला मींस ए पॉइंटेड रूफ, एक हट. हट विद ए पॉइंटेड रूफ, दैट वाज बीइंग टर्म्ड एज कुटाग्रहशाला. और यहाँ पर डिबेट और डिस्कशंस होते थे, और जो जीत जाता था और जो लूजर होता था वो जीते हुए का डिसाइपल बन जाता था. तो दिस यूज्ड टू हैपन इन कुटाग्रहशाला. एंड देयर वर अराउंड 64 सेक्ट्स ऑफ थॉट्स, अलग अलग थॉट्स वाले 64 ग्रुप्स बने हुए थे. कभी उनका नंबर बढ़ जाता था, कभी उनका नंबर कम हो जाता था, बट इट शोज दैट the society was vibrant, it was discussing different issues, it was evolving. Now, right in the beginning of the chapter, I told you that we will be talking about Lord Mahavira as well as Lord Buddha. So first, यहाँ पर we are talking about Lord Mahavira, और Mahavira propagated what? Jainism. And Bhagwan Mahavir was the 24th Tirthankara of Jainism. 24th Tirthankara, Bhagwan Mahavir. इनसे पहले कितने हुए? 23. He was the 24th one. Now, the entire philosophy of Jainism is about non-violence. It's about non-violence, and it talked about that everything in the world has life. The whole world is what? Animated. Animated means life is in there. Even stones and rocks are life. Non-injury. This is the basic principle of Jainism. साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, जन्म एंड पुनर्जन्म किस पे बेस है? साइकिल ऑफ कर्मा. आप जैसे कर्म करेंगे वैसे आपका बर्थ और रीबर्थ होगा. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू वर्ड्स, asceticism and penance. Asceticism and penance are very, very important. Meditation and self-discipline. That is very important if you want to free from cycle of कर्मा और साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ से अगर आपको फ्री होना है, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड? एक्सेटिज्म एंड पेनेंस इज रिक्वायर्ड. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग ऑन विच जैनिज्म फोकस्ड, दैट वाज अबाउट मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस. मोनेस्टिक मींस यू हैव टू लिव द लाइफ ऑफ ए मंक. इफ यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम ऑल द वाइसेस, you have to live the life of a monk. That is very, very necessary for salvation. And whosoever becomes a Jain monk or a nun,
5 vows they used to take. Celibacy. What is celibacy? Not to marry. Brahmacharya. Abstain from killing. No chori. Stealing. Killing means किसी को मारोगे नहीं, स्टीलिंग चोरी नहीं करोगे, लाइंग झूठ नहीं बोलोगे, और बहुत सारी चीजों का आप पोजेस नहीं करोगे, प्रॉपर्टी को अपने पास नहीं रखोगे. ऑल दीज वर द इंपॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म. मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लॉर्ड बुद्धा. नेक्स्ट वी हैव बुद्धा. Buddhism spread to many parts of the world. Many parts of the world. चाहे वो श्रीलंका की बात है, जापान की बात है, चाइना, कोरिया, म्यांमार, सेंट्रल, बहुत सारे इलाकों के अंदर बुद्धिज्म फैला. और बुद्धिज्म को प्रोपोगेट किया किसने? लॉर्ड बुद्धा ने. उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ. वन इम्पोर्टेंट इवेंट हैपेंड इन हिज लाइफ जिससे उनका सारा लाइफ का कोर्स चेंज हो गया. एंड व्हाट वाज दैट इवेंट? दैट वंस ही वेंट आउट विद हिज चैरियटर and he saw some different scenes. What he saw an old man, a sick man, a corpse and a monk. So उससे उनका जो सारा लाइफ की फिलोसफी थी उसके ऊपर बड़े बड़े क्वेश्चंस आ गए. So he left his home, went outside to find out the real truth. To find out the real truth, he attained enlightenment and he became the Buddha. Now, what are the important teachings of Lord Buddha? लॉर्ड बुद्धा की जो सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग है, द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट. इज नथिंग परमानेंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. इट इज सोललेस. एंड अनदर इंपॉर्टेंट सॉरो. सॉरो मीन्स दुख जो है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है. इफ वी आर इन लाइफ तो दुख इज गोइंग टू बी विद अस. एंड बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन. यहाँ इन्होंने मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस की बात पे फोकस, ज्यादा प्रेशर नहीं किया है. इन्होंने कहा कि मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस की बात यहाँ नहीं कही गई. इन्होंने कहा पाथ ऑफ मॉडरेशन, बीच का रास्ता. ना तो आपको एक्सट्रीम पेनेंस में जाना है और ना ही आपको एक्सट्रीम सेल्फ इंडल्जेंस में जाना है. यू हैव टू फाइंड आउट ए मिडल पाथ. बुद्धा रिगार्डेड सोशल वर्ल्ड एज क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. जितने भी हमने बैरियर सिस्टम्स क्रिएट कर रखे हैं, they are not of divine origin, they are being done by us, by humans, right? Buddha emphasized on this. Individual agency means you have to make effort for your salvation and righteous action, जो बाद में धम्मा बन गया, right? And Buddha's last words were be your own lamb. आपको मुक्ति का रास्ता आपको खुद देखना है, आपको कोई और हेल्प करने वाला नहीं, right? तो बुद्ध के बारे में पहला क्वेश्चन बुद्धिज्म के बारे में देखा कि बुद्धिज्म कहाँ कहाँ फैला हुआ है और भगवान बुद्ध की अर्ली लाइफ. फिर सेकंड पार्ट में हमने देखा कि भगवान बुद्ध की टीचिंग्स क्या थी. और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे भगवान बुद्ध के फॉलोअर्स. जो फॉलोअर्स थे वो उन्होंने अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मंक्स डेवलप किया जिसको बोला गया संघ. मंक्स की लाइफ बड़ी सिंपल होती थी. दे वर नोन एज भिक्खु. और जो फीमेल होती थी उनको क्या बोले जाने लगा? भिक्खुनी. इनिशियली वीमेन वर नॉट अलाउड, लेकिन अपने डिसाइपल आनंद की बात मानते हुए भगवान बुद्ध ने फीमेल्स के भी अलाउ कर दिया. सो वो जो थी वो बन गई भिक्खुना. एंड महाप्रजापति गौतमी, द फर्स्ट मदर ऑफ भगवान लॉर्ड बुद्धा, शी बिकेम द फर्स्ट भिक्खुनी. बुद्ध के फॉलोअर किंग्स भी थे, वेल्दी मैन भी थे, गृहपतिज भी थे और वर्कर्स भी थे. पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, दे वर इंस्पायर्ड by the teachings of Buddhism and they adopted Buddhism. Right, moving forward. Now, stupa. अभी हमने right in the beginning of the chapter we talked about Sanchi stupa. और स्तूपास की हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है. Although स्तूपा का कंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री प्री बुद्धिस्ट है, it is प्री बुद्धिस्ट, बट बाद में लेटर ऑन अशोक ने इंसिस्ट किया जो पोर्शंस ऑफ बुद्धा के रेलिक्स, जो बुद्धा के रेलिक्स अवशेष थे, उनको अलग अलग डायरेक्शंस में भेजा गया और वहां पर ऑर्डर किया गया कि आप स्तूप वहां पर बनवाइए. इज क्लियर फ्रॉम हियर. व्हाई? बिकॉज जब बुद्धिज्म के फॉलोअर्स बढ़ने लगे तो वो दूर दूर से एक पर्टिकुलर प्लेस पे आना मुश्किल था. तो उन्हीं जगहों पर क्या किया गया? स्तूपास बनवाए गए. स्तूपा बनवाने के अंदर किंग्स ने भी रोल किया, गिल्ड्स ने भी, श्रेणी जिसको हम बोलते हैं, मेन, विमेन, भिक्खु, भिक्खुनी, एवरीबडी gave donations for the construction of stupa. Now stupa का जो स्ट्रक्चर है, देखिए, जो मैं जरा यहाँ आपको इस पिक्चर पे अगर मैं आपको ले पाऊँ, देखिए ये जो बाहर आपको दिख रही है ये हर्मिका है. What is this?
ये पूरा स्तूपा जो दिख रहा है आपको, सेमी सर्कुलर माउंट है जिसको हम बोलते हैं अंडा। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, ये अंडा है। और ये ऊपर जो है यहाँ दिख नहीं रही है, इसके पीछे के हिस्सा यहाँ पे है हर्मिका, बालकनी लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हर्मिका। हर्मिका के ऊपर बीच में आप देखोगे एक डंडा, एक आपको पोल सा नजर आ रहा है। यू कैन सी ए पोल, दिस पोल इज नोन एज व्हाट, यष्टि। और यष्टि के ऊपर एक बनी हुई है छतरी। सो ये स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट हिस्से थे, राइट। एक यहाँ चारों तरफ आपको वॉल दिख रही है। ये जो वॉल है ये बाहर की दुनिया को, यानी जो सेकुलर वर्ड है जो बाहर का, उसको, और अंदर का वर्ड क्या है, सैक्रेड। सैक्रेड मतलब पवित्र, उसको अलग करती है। 4 गेटवेज हैं, आप देख सकते हैं। एक आपको यहाँ दिख रहा है, दूसरा इधर होगा, तीसरा इधर होगा, चौथा उस तरफ। 4 गेटवेज थे। तो इस तरह से पूरा ये बुद्ध का, सॉरी, स्तूप का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ। This picture is being shown in the book also. You can take the help of that picture also to understand the structure of stupa. Now there are two different stupas. One is Amravati stupa, which did not survive, although it was one of the largest stupas, and another was the Sanchi stupa, but it survived. Amravati stupa, Amravati stupa, I think it was was discovered before time, when people did not understand the importance of the stupa. एक लोकल राजा ने यहाँ की चीजों को यूज किया अपना महल और मंदिर बनवाने के लिए, राइट। सो सांची, अमरावती का स्तूपा समय से पहले डिस्कवर हो गया था। तब तक लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस या स्तूपास के स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पता था। सो दे डिडंट लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर थिंग। सांची का स्तूपा बाद में डिस्कवर हुआ, और बेगम्स ऑफ भोपाल played a very very important role in the preservation of Sanchi stupa. So because of that reason we can say that अगर अमरावती के स्तूपा को अगर हम प्रिजर्व कर पाते तो we would have able to preserve a masterpiece of architecture. So this is again the same thing. Okay. Now later on, although Bhagwan Buddha did not propagated a religion, he just talked um, about individual agency and righteous action. But later, after his death, the disciples and followers of Buddhism, they were divided into two parts. One is known as the Mahayana, and the second is known as the Hinayana. Mahayana means greater vehicle. बाद में बुद्धिज्म जब लेटर आया तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा बोधिसत्ता का। बोधिसत्ता ऐसे कंपैशनेट ह्यूमन बींग्स थे जो हेल्प करते थे लोगों को इस ट्रबलसम वर्ड से पार करने के लिए। कंपैशनेट ह्यूमन बींग जो बाकी लोगों की मदद करते थे। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध को एज गॉड और उनकी इमेज की वर्शिप की जाने लगी। इनका नंबर काफी बढ़ गया। सो दे वर नोन एज द महायान। और जो भगवान बुद्ध के पुराने ट्रेडिशन को मानते थे, उसके हिसाब से चलते थे, दे वर बीइंग नोन एज द हीनयाना और द लेसर व्हीकल। सो these were the two parts of Buddhism, Mahayana and Hinayana. Now coming back to the next slide. Now this is idea of Puranic Hinduism. देखो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था वेदास के बारे में। वैदिक गॉड अलग होंगे और जो पुराना के गॉड होंगे वो क्या होंगे, अलग होंगे। वैदिक गॉड अलग, वैदिक गॉड में हमारे पास क्या थे, वी हैव अग्नि, वी हैव इंद्र। यहाँ पर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट गॉड आ गए, शिव एंड विष्णु। सो दैट वाज अ डिफरेंट बिटवीन द वैदिक गॉड्स इन द पुरानिक ट्रेडिशन। यहाँ पर भी बहुत चैलेंजेस आ रहे थे, बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी के अंदर। सो आइडियाज ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म, तो दो नोशन हुई, वैष्णविज्म की और शैविज्म की। वैष्णविज्म फॉलोअर्स ऑफ विष्णु, शैविज्म फॉलोअर्स ऑफ शिवा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया सेवियर। सेवियर मतलब जब भी हमारे ऊपर दुख तकलीफ कष्ट आएगा, somebody will come forward to save us, right? In Vaishnavism what happened, भगवान विष्णु के कितने अवतारों की हम बात करते हैं, we talk about 10 incarnations। और इनकारनेशन कब, जब भी धरती के ऊपर सिंस बढ़ जाते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस बढ़ जाती हैं, उन सबसे ह्यूमन को बचाने के लिए द अवतार विल कम। भगवान शिव को दो तरीके से दिखाया जाता है, भगवान शिव को शिवलिंग की फॉर्म में भी दिखाया जाता है, भगवान शिव को ह्यूमन फॉर्म के अंदर भी दिखाया जाता है, राइट। सो बहुत सारे सिंबल्स यूज किए गए, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज किए गए भगवान को डिपिक्ट करने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने हेड ड्रेस की बात की है,
ऑर्नामेंट्स की बात की है, वेपन्स की बात की है, हाउ दे आर सीटेड, ऑल दोस थिंग्स वर बीइंग पुट इनटू द माइंड्स ऑफ द पीपल। और इन सबको स्टडी करना है। अगर आपको इन सबको स्टडी करना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? यू नीड टू नो द हिस्ट्री बिहाइंड इट। इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? अगर भगवान शिव के बालों में से गंगा निकलती है तो उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, आपको वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको वो स्टोरीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। और जो पुरानी संस्कृत थी वो वैदिक संस्कृत से आसान थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब इसको विमेन और शूद्रास को भी अलाउ कर दिया गया। वेद पढ़ने से मना था विमेन और शूद्रा को, लेकिन पुराण पढ़ने से उनको नहीं रोका गया। They were being allowed. Why? Because new challenges were coming from the Brahminical tradition. Moving forward, one question was left. So I think there are two questions left. Now, जब हम बात कर रहे हैं भगवान शिव और विष्णु की, तो उनकी वर्शिप कहाँ होगी बेटा? वर्शिप विल बी डन इन टेम्पल्स। तो इनिशियली टेम्पल्स वर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर होते थे, एक स्मॉल स्क्वायर रूम होता था और उसके अंदर एक बोलते थे गर्भगृह, जहाँ पर भगवान जी की मूर्ति रखी जाती थी और एक सिंगल डोरवे होता था वर्शिपर के लिए। धीरे धीरे स्ट्रक्चर क्या होने लगे? बड़े होने लगे। ठीक है, स्ट्रक्चर बड़े होने लगे, शिखर बनने लगे मंदिरों के ऊपर। आप देखोगे बड़े शिखर बनने लगे, ऊंचे ऊंचे टावर्स बनने लगे और मंदिर को आप दूर से देख भी सकते थे। दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलप ये हुआ, जो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, रॉक कट टेम्पल्स। रॉक को काट के टेम्पल्स को क्रिएट किया जाने लगा। रॉक्स को काट के टेम्पल्स को क्रिएट किया जाने लगा। ये कैलाशनाथ टेम्पल का एग्जांपल है आपके सामने मुख्य दे दिया हुआ है। सो मंदिर बनाने के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज किया जाने। This is the end of the, just a second. This question we have already discussed. So this is the end of chapter number 4. If you have any queries, any questions, please put in the box so that I can reply back to your comments. Your feedback is going to be a great help for me so that I can improve my classes. So take good care of yourself. Namaskar. We'll be coming back with a new chapter with some new ideas, new thoughts. Till then, keep learning, keep evolving, remain happy, safe. Namaskar.